this again. Okay, so today's topic is like regression and correlation. This is just a one concept, two different terms, or you can say sometimes maybe it's two different concepts. Before we start that regression or correlation, someone already know about regression, or have you heard machine learning? If you just unmute yourself, that will be like interactive section. Otherwise, I will be talking and you will be listening. Like I don't know if even you are listening or you are attending this online session or not. So you haven't heard about machine learning. Yes, please. I just heard a burp. Maybe. No, sir, we are not familiar with regression. All right, but I'm sure you must have heard the word machine learning. I mean, so these words are like machine learning when a machine learns supervisedly or automatically, like unsupervised. So that's a very broad subject. I'm not sure if you will have some contents of machine learning in your degree, but in your daily life, you are confronting the consequences, let's say, or benefits or not benefits of machine learning. So machine is learning with a data we provide to the machine, and then it predicts or decides on basis of that data, right? So it gives us some kind of prediction, the future prediction based upon that data, or it helps us to decide, or it sometimes automatically decides what should be, I mean, done based upon the previous data. So this is a broader concept of the machine learning, and it involves a lot of covers a lot of algorithms where you talk about so many variables. You basically train your machine learning algorithm or a model with so many variables, so many lot of data, let's say. And so the first step in, let's say, to the machine learning field is like, I mean, when it started originally, it was like this simple regression thing where you have a relationship between two variables, x and y. You might have also, I mean, they learned the same thing in business math, like linear equation. So there is a relationship between x and y, and when x increases, y increases, or when x increases, y decreases. So it's other way around, increasing and decreasing. So it's a linear kind of function, linear model. That is simple regression. Uh, so how it's related with the data or machine learning. So it helps us to predict the value of the y based upon the previous values of the x, right? So we will see in a short. And before we need to learn that regression, we need to know this first concept, which is like regression. Let me switch on my कीबोर्ड. I don't know where. इतना टाइम जब ऑनलाइन टीचिंग को हो गया हो तो you forget lot of things. इसमें ड्रा का ऑप्शन आता तो है. Okay, forget for line. So so first Sir, thing word we per sir. हाँ word पर तो I have okay. I will be switching screen, so I'm just stopping this and how to stop this. I'm sharing the complete screen to you. I will be switching. So share and advanced में
This is advanced function of, see if it works. Keeping only business estates, slides. And I don't know how to move up like this. Okay, so this is scatter plot. You see the screen in my background, right? Yes. But this doesn't serve my purpose because I have to write something. This is the screen, okay. All right, so let's first go through the presentation and then I will work out an example on the word. So I will write and make tables over there. Scatter plot, first we need to understand in order to understand correlation and regression. Scatter plot is just a diagram of representing data. I remember ये हमने first lecture में इसका थोड़ा सा glimpse दिया था when you want to represent two variables like a comparative scenario, दो variables का, you just want to see the dependency or independency. Then we use the scatter plot. Or in short, it's just used to see the relationship between two variables, right? And correlation next is it's used to measure the quality of relationship or in simple quantify the relationship. So correlation just gives a numeric value, number value, and looking at that number value, we can judge or we can say that how much two variables are related, right? And that correlation parameter or correlation coefficient always lies between -1 and 1. Okay, so in the coming slide we will see. So this is just a measure, just a number, and this is a graph which by looking at the graph you can just judge the relationship or you can say the relationship. Okay, so this is like a scatter graph. If I just make it a big screen, so two quantitative variables, the numeric variables. Okay, you try to represent these variables in an x-axis and y-axis. For example, if you have values to the x and y, so you represent every pair of x and y with a dot. This is very similar to जैसे आप functions को plot करते हैं, ठीक है? एक x की value और उसके corresponding y की value होती है, and then you represent with a dot on the xy plane, ठीक है? Like this. So we have these 6 values of x and y, and every value just corresponds to, for example, we have this 2 and 5, so this value corresponds to 2 and y, where this x value of x is 2 and value of y is 5. इसी तरीके से अगर कोई भी और आप यहाँ पर जो स्क्वायर डॉट है इसको लेंगे तो this will be representing another pair. Is this clear? Okay, how do we make a scatter diagram of the data? Is this clear? सर इसका क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ होगा? Question like you will be given the data of x and y. Let me show you one question. I have example in the presentation. Like this is the example. ठीक है? Living area x of any house, and these are the prices, selling prices.
are 5 different houses. So these are the values of X, these are the values of Y. If it's not exclusively given कि X कौन सा है, Y कौन सा है, ये थोड़ा सा आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है. तो जो डिपेंड कर रही होगी that will be Y. जो इंडिपेंडेंट फील आपको हो रही होगी करंट सिनेरियो में या अप्लाइड सिनेरियो में आपकी एप्लीकेशन में, लाइक अभी आप देखेंगे X जो एरिया है, द लिविंग एरिया ऑफ एनी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टेड हाउस, तो वो दैट इज इंडिपेंडेंट वन. अगर वो आगे पीछे होगी तो सेलिंग प्राइस उसकी ऑफ कोर्स चेंज होगी. सो दैट विल बी डिपेंडिंग. जैसे जैसे ये X द लिविंग एरिया इंक्रीज होती है, जैसे जैसे प्राइस भी आपकी, फॉर एग्जांपल, सो इट्स क्लियर कि आपका ये जो है वो प्राइस है एंड दैट्स गिवन इन द थाउजेंड्स. ठीक है, $178,000 और ये 14 भी थाउजेंड्स स्क्वायर फीट है. ठीक है, सो हमने इसको स्केल करके जस्ट 14, 15, 17 रखा हुआ है or 178. Now question can be like draw the scatter diagram or plot scatter diagram. तो आप क्या करेंगे, आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देखेंगे. 14 to 16 है, so you most probably start with one number less than 14. आप 13 से start करें या 14 से थोड़ा सा पहले start करें. ठीक है, can be like this one. Do you see this screen? So this can be 13, this can be 14, 15, 16, 17, and if you see we have 19, so like 18, 19 and can be 20. But यहाँ पर minimum 178 है and maximum 200. So you most probably would like to start from 175. So let's think about this as a 175 and then maximum is 200. So let's say this is 205. So this is 200, this is 180, and then in between this will be like 190. This will be 185 thousandths, of course. Okay, you shouldn't forget that limit. Now another marker color, and 14 and 78 is just one order pair, are values of X and Y. So X and Y, 14 and 178. So whenever you see X is, so this is X, this is Y. Now X is 14 and then Y is 178. This makes it this circle, or you can just denote it by a circle or a square or a dot, but it should be quite visible. एक ये इस तरह होगा आपका, दूसरा आपका ये पेयर है, तीसरा, चौथा और पांचवा. और ये जब सारे पेयर्स आप रिप्रेजेंट कर चुके होंगे, दूसरा है फॉर एग्जांपल 15 and 230. So 15 and, oh my God, I made a mistake. 200 is not the maximum price. 270 is maximum price. So let's make this 285, and I need to remove all these. And this is 180. This should be 180 to 2. So this should be 240. ये आपका होना चाहिए 210, 270 something. Okay. Now 15 and 230 will be somewhere here. इसी तरीके से third pair 17 and 240. So this is 17 and 240. 230 से थोड़ा सा ऊपर, like this. This one, and 19 and 275. So 19 and 275. This one. Last one is 16 and 20. आप देखेंगे इसमें sorting कोई भी नहीं है. जैसे जैसे डेटा आता जाएगा या given होगा वो हम प्लॉट करते जाएंगे. So 16 is like 200, 16 and 200. अच्छा, ठीक है. Now let me add इस डेटा में, अब ये देखें these are datas. अगर आप realistic example में देखें,
we have some message here. Okay, so रियलिस्टिक डेटा में देखें आप, रियल एस्टेट एजेंट के पास फॉर एग्जांपल ये डेटा है 14,000 स्क्वायर फीट का एक विला है, उसकी प्राइस किसी टाइम 178 मार्केट में सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड की गई। डेटा वक्त के साथ इसमें ऐड होता रहा। आफ्टर फ्यू वीक्स एक और 14,000 का टाइम की तब्दीली की वजह से या एरिया की तब्दीली की चेंज होने की वजह से 14,000 का एक और जो है बिल्डिंग है, बंगलो व्हाट्सोएवर, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 205 रिकॉर्ड की गई। आर यू विथ मी? ठीक है, तो इसमें एक और मतलब फॉर एग्जांपल आ रहा है 14 और उसकी जब प्राइस ये आपने रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, अब ये एक पेयर मैथ में जो फंक्शन होता है उसमें इस पेयर की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि वहां पर अगर x की एक वैल्यू है तो उसके दो वैल्यूज नहीं होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इट इज ऑल पॉसिबल, क्योंकि x इज सम वेरिएबल, उसकी प्राइस वक्त के साथ ज्योग्राफी के साथ चेंज होती रहती है। नाउ इफ आई जस्ट वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस वैल्यू इन स्कैटर प्लॉट, तो ये क्या हो जाएगा 14 पे 205, आई नीड टू गो बैक टू दिस वन, एंड ये 14 था, उसकी पहले 178 थी, नाउ 205, सो समवेयर हियर एक और पेयर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 15 पे प्राइस कहीं आगे पीछे चेंज हुई है तो वो भी मुझे ऐड वक्त के साथ, अगर डेटा या पहले ही डेटा सेट में आपके 14 के दो बेंगलोज या बिल्डिंग्स की डिफरेंट प्राइसेस हमें मिली हुई हो सकती हैं। डज इट मेक सेंस? दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द मैथ्स, क्योंकि वहां पर एक x की वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही y की वैल्यू होती है। डू आई मेक सेंस? जस्ट गिव मी सम नोट when you're with me. आप टेक्स्ट कर लें या कोई जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। Is this clear? All right, thank you. I mean, at least there should be someone who should respond. Otherwise, I will be feeling like talking to no one. Okay, so this is how you मेक द स्कैटर प्लॉट। आपके पास ये एक्स वाई की वैल्यूज गिवन होंगी और फिर आप इस तरह का प्लॉट बनाएंगे जो सोबर लाइक कंप्यूटर में इस तरह दिखता है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स पेन पेपर के डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी ऑफ ड्राइंग एंड ज्योमेट्री, तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक क्वेश्चन स्कैटर डायग्राम। ओके, लेकिन ये हेल्पफुल कैसे होता है? लेट्स कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। आप उसको इंटरप्रीट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वन नाउ, these lines I mean give you a feeling that when x increases, ये आपका x इस तरफ राइट पे इंक्रीज हो रहा है, y पे इंक्रीज हो रहा है, so it has a upward trend। ठीक है, ऐसे ही है। जी। So it's like this one. Okay, so I mean we have like this trend। ठीक है, लेकिन ये सब ये जो लाइन है ये इन डॉट से क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि ये इतनी स्कैटर्ड हैं कि सब डॉट से क्रॉस नहीं हो सकती। सो वी कैन हैव सो मेनी पॉसिबल लाइंस। फॉर एग्जांपल ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो भी लाइन होगी या तो इससे क्रॉस करेगी या इससे क्रॉस करेगी। ये जो 14 की दो वैल्यूज हैं, ठीक है, तो वी विल हैव सो मेनी, आई मीन वी कैन हैव सो मेनी डिफरेंट लाइंस। लेकिन हमें रिग्रेशन मॉडल जो है या रिग्रेशन इक्वेशन या सिंपल रिग्रेशन, वो एक ऐसी लाइन देती है जो इस डेटा सेट में बेस्ट फिट हो स्केटर में। अच्छा, द पॉइंट हमारा ये था कि इट्स लाइन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, सो दिस वाज अपवर्ड। डाउनवर्ड का एग्जांपल ये हो सकता है, जस्ट रिमूव दिस। ओके, ये लाइन
ओके, ये लाइन अब ब्लू, इसको प्लीज वो कर दीजिएगा। ये x की वैल्यूज हैं x एक्सिस पे, y पर आप इसमें देखेंगे कि ये अपवर्ड ट्रेंड दे रहा है। सो अगर जिस तरह अपवर्ड ट्रेंड हो तो आप उनको कहते हैं पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। ठीक है, एक लाइन सा उनको रिलेशन मतलब मिल रहा होता है। बिल्कुल इसके राइट पे आए इस पे, तो आपको इसमें नेगेटिव लीनियर लाइक इट्स लाइक दिस वन डिक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रांग और वीक का मतलब ये है कि ये जो सारे डेटा पॉइंट्स हैं ये एक लाइन के बिल्कुल काइंड ऑफ क्लोज या आसपास हैं। ठीक है, आई मीन दे आर मोर क्लोजर टू, अगर हम एक ही लाइन बनाते हैं, अगर इसमें हम इस तरह की कोई लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर उस लाइन से डेटा दूर आपको नजर आते हैं या क्या, इसीलिए दिस इज लाइक वीक वन। इससे नीचे आए ये जिसमें नो रिलेशन लिखा हुआ है, नाउ दिस डेटा इफ यू ट्राई टू आई मीन मेक अ लाइन, यहाँ आप ऐसे लाइन बनाए या यहाँ ऐसे लाइन बनाए, इसमें बहुत ज्यादा आई मीन यू कैन आर्ग्यू कि इसमें बहुत ज्यादा वीक रिलेशनशिप, इस तरह अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी, तो दोनों तरफ का पॉजिटिव लीनियर और नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। Hence, it's confusing. So we say there is no apparent या visible relationship between these variables. यहाँ पर x है, let's say area of, और यहाँ पर selling price या kind of, जो भी दो variables आपके होंगे। एक एग्जांपल और हो सकता है x और y का, फॉर एग्जांपल height and weight are up correlated with each other. So for any human or any living creature, like not cellular but animals or humans, are उनकी जो height और weight है, those are correlated. अगर जैसे height बढ़ती है तो for example weight भी naturally उसमें, okay. Last one is like this curvy linear relationship. ये जब linear relationship ना हो, I mean डेटा आप स्कैटर प्लॉट करें और उसमें इस तरह के आपके कर्व आ जाए, ठीक है, या कहीं उस तरह ऊपर कर्व आ जाए, like this one. Let me try to I mean have a random example over here. ये आपका x, ये आपका y, ये x की ना कुछ इस तरह y के साथ वैल्यूज हैं। नाउ इफ यू जस्ट ट्राई टू मेक अ लाइन, आई मीन ये स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाएंगे तो ये बहुत सारी वैल्यूज दूर हो जाएंगी, बट दिस कर्व इज लाइक अ बेस्ट फिट टू दिस डेटा। सो दिस इज कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर, ठीक है, और इसमें भी दो होते हैं आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो है इस प्रेजेंटेशन में दैट इज लाइक नेगेटिव, यू इस तरह हो रहा है, और इसमें दिस इज लाइक पॉजिटिव, व्हेन x इज इंक्रीजिंग y इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एग्जांपल ऑफ कर्वी लीनियर। ये आपको प्लॉट करने के बाद आइडिया होता है, दिस इज पर्पस ऑफ द स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्ट्रांग और वीक बेहतर तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन है। आई मीन जैसे ही उनकी जो आपस में विड्थ है एक लाइन के ज्यादा क्लोज होंगे, दैट शोज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये अगर एक लाइन से ज्यादा विड्थ में है तो ये आपके वीक रिलेशनशिप है। ये पॉजिटिव, ये ऑफ कोर्स देन नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपकी चीजें हैं। प्लीज होल्ड ऑन, आई हैव अ मैं बता रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू। Okay, is this clear? Any question so far? Strong weak relations, we have a comment. It was voice is not clear even now. अभी आवाज सही है? किसी और को भी कंप्लेंट है वॉइस से? clear. Okay, all right, so far we discussed scatter plot,
ठीक है, कि उसको आप कैसे प्लॉट करते हैं और उससे इंटरप्रिटेशन आप क्या ले सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, और स्ट्रांग है या वीक है. जस्ट वन क्विक नोट, ये जो जूम का सेशन है दिट जस्ट लास्ट फॉर 40 मिनट्स बिकॉज उसके बाद हमें दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी मीटिंग. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली साइन आउट या मीटिंग बंद हो जाती है 40. अब यूजिंग द सेम लिंक यू कैन ज्वाइन अगेन. ठीक है, so we have 2 minutes left in that meeting. All right, so coming back to the things which are like next was the correlation. Correlation जो दोनों को quantify करता है. I mean, now look at these two graphs. Strong relation or linear relation. ठीक है, but कितना strong और कितना weak, this can be quantified by finding the correlation coefficient of two variables. So for example, if you have a data of two variables, जैसे यहाँ पर हमने example देखा कि एरिया और हाउस प्राइसेस. ठीक है, तो इस तरह आपके हाइट एंड फीट साइज. फॉर एग्जांपल, दिस इज अनदर एग्जांपल, हाइट एंड वेट ऑफ द 7 or 8 persons ऑफ सैंपल. तो इनका कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, तो वहां से वो नंबर जो आएगा कोएफिशिएंट, दैट विल ऑटोमेटिकली आई मीन टेल अस कि कितना स्ट्रांग या कितना वीक रिलेशनशिप है. ओके, this is telling about that quantitative variables के कितने आपस में relate हैं. So that thing is called correlation coefficient. If someone asks you what is correlation coefficient, so that's a statistic or it's a measure that quantifies a relationship between two variables. उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी, बट इट ऑलवेज remains between -1 and 1. इससे ना बाहर जाएगा correlation coefficient, ना 1 से बाहर जाएगा, ना -1 से लेस ना -1. अच्छा, जो इसका वैल्यू है, like not sign, indicates the strength of the relationship. For example, अगर दो डेटा सेट हैं, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, अगर उसका रिजल्ट आपका correlation coefficient का 1 आता है, so there will be a strong relationship. Meeting is about to end. We will be back in a while.